Assalamu alaikum. Second lecture on legal aspect of medical practice. Defensive medicine. Defensive medicine, when a doctor, without any definite diagnosis, give multiple drugs to a person for a disease, is the defensive medicine. As a person comes to you with pain abdomen, you give him the antibiotic, you give him the antimebiases, you give him the antipeptic ulcer drugs, you give him the antacids, and you give him the spasmolytic drugs. So it means that you have no definite diagnosis that what disease you are going to be treated. This is the defensive medicine. As a person comes to you with the fever, and you give him the paracetamol, then you give him an antibiotic, you give him anti-malarial treatment, you give him the anti-typhoid treatment, and so on. So it means you are not definite what is the diagnosis, and you give him the multiple drugs ke koi to kaam karegi. This is the defensive medicine. Then the respondeat superior vicarious responsibility. It means that the senior most person will be held responsible for any irregularity occurring under him. As a head of department, he will be responsible what is being done inside the department. As a principal of a medical college, he is responsible what is going to be occur in the premises of the medical college. So this is called the vicarious responsibilities. The senior most person will be responsible for the action of his juniors working under him. Res ipsa locator, as you already know, that it means the thing speaks for itself. So as a surgeon left a Caesar, an instrument, any swab inside the body, inside the abdomen, so in this case he has to prove that he is not negligent. The complainant is very much clear that this Caesar or this instrument has been left by the surgeon during the operation. This is the res ipsa locator. Then the abandonment and further treatment. Don't abandon your patient. Either treat it or discharge it or refer it to the further specialist or consultant. Either you should treat it. If he has gone all right, discharge him or refer him to any other specialist. Don't abandon your patient. Then damages claimed. The claim for the damages, हर्जाने का जो claim है, this complaint is lodged before the court. So किस बेस के ऊपर हर्जाने का दावा किया जा सकता है? Damages claimed. Number one is the physical injury occurred to a person during an operation. So undue physical injury which may occur to a person during operation. Then the pain, if there is excessive pain, which one pain may be due to the normal operation, but it is very much excessive pain is there due to negligence of a doctor, then the
patient may go to the court to claim the damages against the doctor for excessive pain. Then he may go to the court for the mental suffering during the disease. He may also go to the court for the mental suffering during this operation or disease. And then the loss or impaired of earning capacity. How much earning capacity is lost during for the negligence of the doctor? If due to the negligence of the doctor the earning capacity is lost, then the court will decide against the doctor, and doctor have to pay for it. This is the sorry. These are the things on which the damages may be claimed as physical injury, excessive pain, mental suffering, and loss and impair of earning capacity. Then the types of medical negligence, it is basically two types, civil and criminal. Civil resulting in damages against the doctor in a civil court for wrong treatment, undue prolongation of treatment, and undue suffering. Civil cases are of as wrong treatment ही गलत किया जाता है. Undue prolongation of treatment, जो बंदा ऑर्डिनरीली एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, अगर वो 3 महीने में भी ठीक नहीं होता, it is the undue prolongation of the treatment and undue suffering. For these, the patient may go to the civil court to claim the damages. Criminal medical negligence as cases against state resulting in punishment. इसमें civil cases में the punishments are not awarded, but the compensation is awarded. In case of criminal cases, punishment is awarded as wrongful death, criminal abortion. We will study the cases in which this criminal negligence occur. The criminal negligence occur when due to the negligence of a doctor there is grievous injury occur to the patient or death of the patient occurs. It is the criminal negligence. When there is due to the negligence of a doctor there is grievous injury occur to the patient or death of the patient occur, it is the criminal medical negligence. Then the contributory negligence means both the patient and the doctor are responsible for that negligence. Both the doctor and the patient both are responsible for that negligence. डॉक्टर ने किसी चीज़ से मना नहीं किया और पेशेंट ने कोई चीज़ करने से पहले उससे पूछा नहीं है, तो that is the both the negligence of the patient and the doctor. Then the third party negligence means the negligence of the relatives or the negligence of the nursing staff. Nursing staff may be negligence, and it is if the negligence occur by the third party, it means the negligence of the relatives or the negligence occurred due to the nursing staff. Then the proof of medical negligence. Proof of medical negligence, number one, the duty of care. Whether the duty of care was established or not. If the death of the patient occurs during the process of transport of the patient to the hospital or to the doctor, the duty of care is not established. If the death of the patient occurs in the boundary of the hospital and when the patient has not reached to the doctor or reached to the emergency, then the duty of care is not established. When the person has come to the emergency, when the person has come to the doctor, and then the duty of care is established. अगर किसी की हॉस्पिटल की लाते हुए हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर या हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाद डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, क्योंकि ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश ही नहीं हुई है. Then the breach of duty of care. If the duty of care is established, then if there is any breach in the duty of care, डॉक्टर साहब जो है सर्जन साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करते करते वो छोड़ के खाना खाने चले गए या किसी और काम से चले गए, तो दैट इज़ द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी
of care. Then the damage resulting due to that breach of duty. Again, to claim the damage is necessary. The damage should be there to claim the damages. Damage resulting due to breach of duty, the damage should be there for medical negligence. If there is no damage, no medical negligence occurred. If there is no damage, no medical negligence occurred. Damage should be there to claim the damages. डैमेज होगा तो फिर जो है क्लेम होगा, नहीं होगा तो क्लेम भी नहीं होगा. अगर कोई सर्जन ऑपरेशन करते हुए मरीज़ को छोड़ के उधर ही खाना खाने के लिए चला गया है और वापस आया, मरीज़ को कुछ नहीं हुआ, तो दैट इज़ नॉट द मेडिकल नेग्लिजेंस. मेडिकल नेग्लिजेंस उस वक्त होगी जब कोई डैमेज होगा. तो डैमेज अगर होगा तो डैमेजेस क्लेम करेंगे. क्लियर? दैन ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी विदाउट एनी न्यू इंटरवीनिंग एक्ट. Actus novus intervenens. Actus novus intervenens means when a entirely new incident occur during the this process of treatment, or where in this process when a new situation occurs, entirely new situation occurs during the routine incidents, entirely new situation arises. As there is an accident, there is a fight, एक बंदा जो है fight है, and he got the fracture of the radius during that fight. Then the ambulance is called. During process of transfer of this patient to the hospital, ambulance जो है, there is an accident to the ambulance and the patient dies. Now, the person who has inflicted the injuries will not be held responsible for his we will not be totally held responsible for his death, because here entirely new situation arises. एक बंदा है, उसकी लड़ाई हुई है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र करने के दौरान जो है वो गाड़ी को या एम्बुलेंस को एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में बंदे की डेथ हो जाती है. तो अब ये जो बंदा है जिसने इंजरी लगाई हैं वो टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डेथ का. दैट इज़ कॉल्ड द novus actus intervenens. And an entirely new situation occurs during the routine incidences. रूटीन वाक़यात में एक नई, बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड द novus actus intervenens. An entirely new situation occurs. It is called the novus actus intervenens. Translation of damage in terms of compensation or punishment. Now the court will decide that what compensation may be given to the complainant. Court will decide, or if any punishment is required, then the court will also decide the punishment. So in case of civil cases, the punishment is awarded. In case of in case of civil cases, the compensation is awarded, and in case of criminal cases, the punishments are awarded. So these are the proof of medical negligences. The example of medical negligence, this is a university question. Define and classify medical negligence and give 10 examples of the medical negligence. Now here the examples: unexplained leaving the instrument or swab in the patient body during operation. This is called the res ipsa locator. Thing speaks for itself. Unexplained leaving the instrument or the swab in the body of the patient during operation. Res ipsa locator. Then the leaving the patient unattended. It fell and sustained injuries, or leaving the patient unattended during labor and damage occurred to the patient or newborn. This is another example of medical negligence. Leaving the patient unattended as the person during the recovery of the patient from the anesthesia. If he is left alone, the person may fell on the ground and may sustain injury. This is the medical negligence. And if same way, if during the process of labor
the patient is left alone and injury to the mother or the child occur, it is also a medical negligence. Then failure to administer anti-tetanus injection where indicated. This is another medical negligence. Failure to administer anti-tetanus injection where indicated. If there is an accident is on the road, and you will have to administer anti-tetanus injection. And if you don't administer this anti-tetanus injection as injection is indicated, it will be, and the person develops the tetanus, it is the medical negligence. So please keep it in mind. If there is damage, the damages will be claimed. Damage should be there to claim the damages. If there is failure to administer anti-tetanus injection, you have failed to administer the anti-tetanus injection and tetanus does not develop, it means no medical negligence. For the medical negligence, damage should be there. Failure to administer anti-tetanus injection where indicated. Fourth example, failure to diagnose fracture by not using X-ray. It is your duty to use all type of diagnostic procedures to diagnose a disease. As a person comes to you with swelling of the wrist or swelling of the elbow joint and you don't prescribe the X-ray, it will be treated as a medical negligence because the X-ray is indicated. Now, please keep it in mind, if you don't prescribe the X-ray due to the person is very poor and he cannot afford the charges of X-ray, no, you will be held responsible for this medical negligence. It is your duty that you should write down the X-ray. आपने उसको X-ray लिख के देना है, चाहे वो जिधर से मर्जी पैसे लाए, ये उसका काम है, उसकी ड्यूटी है, लेकिन आपने इंडिकेटेड जो है ना वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो ज़रूर लिखने हैं कि इसको एक्सरे की ज़रूरत है, एक्सरे कराए। वो एक्सरे चाहे जाके कहीं से फ्री करवा के लाए, जहाँ से भी लाए या जिधर से भी लाए, लेकिन इट इज़ योर ड्यूटी कि आपने वो एक्सरे लिखना है। अगर आपने एक्सरे नहीं लिखा और बाद में कोई फ्रैक्चर निकल आया या डिसलोकेशन निकल आई, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल and will be treated as medical negligence. Damage to the fifth example of this medical negligence, damage to the major nerve and artery during operation. And other is the example of medical negligence is the damage to major nerve or major artery during operation. Failure to remove placenta, decomposition of which may lead to death. So failure, if you fail to remove the placenta and damage occur, a disease arises or death occurs, you will be held responsible for this death. It will be treated as a medical negligence. Now if the death occurs, then it will be treated as criminal medical negligence. Operation without consent. It is your duty to perform operation with consent of the patient, and this consent should be taken before the procedure. It should be taken before the procedure. Consent taken after the procedure, after the operation, is treated as invalid consent. So before starting the treatment, before examination of the patient, before performing the operation on the patient, please take the consent. Consent is a legal compulsion on all doctors. It should be before examination, it should be before any operation, diagnostic procedure or operative procedure. It is the duty of the doctor to take the proper consent. Warranty a cure. 8th number. Warranty a cure. There is no warranty of human being. किसी की बंदे की कोई गारंटी नहीं है. We are sitting here, nobody can say हम इधर से उठ के जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे. एक बंदा बिल्कुल हेल्दी होता है, बड़ी दफ़ा आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, एक बंदा बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, सडनली जो है ना उसको हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइज. कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है. इसलिए डोंट वारंटी ए क्योर. इंसानी जिस्म की कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं है. Please keep it in mind.
किसी बंदे को आपने गारंटी नहीं देनी, कोई वारंटी नहीं है इस्लामी इंसानी जिस्म की। ये नहीं है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको वारंटी देता हूँ, नो वारंटी। बड़े बड़े सर्जन जो हैं वो एक आम जो है इसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन में फंस जाते हैं और वो ऑपरेशन जो है वो मुसीबत बन जाता है उनके लिए। सो देयर इज़ नो वारंटी, नेवर एवर वारंटी ए क्योर, it will be treated as medical negligence. Bleeding to death after an operation. So, if bleeding to death after an operation is also a medical negligence. So, please cut the bleeder, tie them. जहाँ से खून निकल रहा है उसको बंद करें खून को। This is your duty. And if the patient death occurred due to excessive bleeding, it is your medical negligence, and as the death has occurred, it means it is a criminal medical negligence. 10th example, using non-sterile instruments is another medical negligence. Always use the sterile instruments, never ever use the non-sterile instrument. Same way, use the new disposable syringe for every patient. Every time, each time, use a new disposable syringe for every patient. Don't reuse the disposable syringe. Same way, using non-sterile instrument is also treated as also a medical negligence. Neglecting patient on the plea of having more patients than could be taken care of. अगर आप ये कहते हैं कि neglecting the patient on the plea of having more patients than could be taken care of, कि जी मरीज़ इतने ज़्यादा थे मैं ख्याल नहीं कर सका, तो no, it will be treated as medical negligence. आप मरीज़ उतने ही देखें जितने आप जो है वो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली 500 मरीज़ देखें, नो, जितने मरीज़ आप उस टाइम में देख सकते हैं आप उतने ही देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 500 मरीज़ देखें। जितने मरीज़ों को आप देख सकते हैं सिर्फ आप उतनों को ही टाइम दें, उतनों को ही देखें। सिर्फ इस बेस पे किसी मरीज़ को नेगलेक्ट कर देना कि जी ये जो मेरे पास मरीज़ इतने थे तो मैं हर एक का नहीं ख्याल रख सका, नो, उतने ही मरीज़ देखें। जिनको भी देखें बड़ी तसल्ली के साथ देखें और जो है जितने मरीज़ देख सकते हैं उतने देखें, उतनों को ही टाइम दें, उतने ही मरीज़ देखें। बहुत ज़्यादा मरीज़, ये कोई मसला नहीं है कि जी मेरे पास मरीज़ ज़्यादा थे इसलिए जो है ना ये नेगलिजेंस होगी, नो, इट विल बी ट्रीटेड एज मेडिकल नेगलिजेंस. नाउ क्रिमिनल नेगलिजेंस, क्रिमिनल मेडिकल नेगलिजेंस. Example of criminal medical negligence: death of the patient due to medical negligence is a criminal negligence. Operation on the wrong patient is also a criminal negligence. Operation of the wrong patient is also a criminal negligence. Operation एक असलम का होना था और कर अनवर का दिया, तो ये it will be treated as criminal negligence. सो किसी की जगह के ऊपर किसी और बंदे का ऑपरेशन कर दिया, जिसका ऑपरेशन होना था, जिसका किडनी का ऑपरेशन होना था, उसका जो है प्रोस्टेट का कर दिया, तो ये जो है ये क्रिमिनल नेगलिजेंस में आएगा. ऑपरेशन ऑन रॉन्ग लिम्ब और रिमूवल ऑफ रॉन्ग लिम्ब. सो एज देयर इज़ ए, आई हैव सीन ए केस in case of the surgery. I was on duty in surgical ward, and the person Baba ji the, he was having the fracture of the right tibia and fibula, and when I and the surgeon entered in the operation theater, the persons who are working in the operation theater as operation theater, the persons working who are in the operation theater, the staff nurses, उन्होंने जो है वो लेफ़्ट साइड तैयार करके रखी हुई थी, तो वो जो है उसको हमने पकड़ के उसको खींच के जो है ना लेफ़्ट साइड के ऊपर उसको हमने प्लस्तर लगा दिया. राइट साइड की बजाय लेफ़्ट साइड पे प्लस्तर लग गया. जब बाबा जी तो वैसे बेहोश थे,
तो जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा ये तो मेरे जो है ना लाते तो है, टांग तो यही टूटी है, प्लस्तर उस पर लग गया है। तो दैट इज़ द ऑपरेशन ऑन रॉन्ग लिव। ये बड़ी फिर ऊपर तक बात गई, लेकिन यह है कि बाबा जी ने हमारा साथ दिया और जो है वो हम उसमें बच गए। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरा उसी जगह ही प्लस्तर लगा था जहाँ पे मेरी टांग टूटी थी। लेकिन यह है कि ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आपने लेफ़्ट साइड की टांग टूटी हुई है, प्लस्तर राइट पे लगा दिया है। इट विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। लेफ़्ट किडनी निकालना था तो राइट निकाल दिया है, लेफ़्ट पे ऑपरेशन, लेफ़्ट आर्म का ऑपरेशन होना था, राइट का कर दिया है। इट विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। एम्पुटेशन ऑफ द रॉन्ग ऑर्गन, फिंगर, लिम्प। एम्पुटेशन करनी थी राइट हैंड की फिंगर की और लेफ्ट हैंड की फिंगर की एम्पुटेशन कर दी। इट विल आल्सो बी ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस। Giving wrong blood transfusion. So see before transfusion, see the group of the patient and see the group which is written on the blood bottle. ब्लड की जो खून की बॉटल है उसके ऊपर देखें कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा लिखा हुआ है, और फिर उसको चार्ट के ऊपर देखें कौन सा लिखा हुआ है। अगर आपने रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन दी, इट विल बी ट्रीटेड दैट क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये पनिशमेंट्स होती हैं, इसमें कंपनसेशन नहीं होती। Gangrene or paralysis after too tight POP, usually in fractures. The surgeons, particularly orthopedic surgeons, they apply the POP on the fractured site, and if that POP is too tight, which leads to the gangrene of the distal organ, it will be treated as criminal negligence. किसी बंदे को प्लस्तर लगाया है, उसकी हड्डी टूट गई, प्लस्तर इतना जो है वो टाइट लगा दिया है कि उसका हाथ या पाँव जो है वो डिस्टल आर्गन की गैंग्रीन हो गई है या उसका पैरालिसिस हो गया है, इट विल बी ट्रीटेड एज मेडिकल क्रिमिनल नेग्लिजेंस. So these are the 6 examples of the criminal medical negligence. Now the common surgical negligences, as surgical error, ligation of duct, it is also a medical negligence. Surgical errors as ligation of duct, retained object as swab or seizure inside the body, too tight plaster may lead to paralysis or paralysis of the distal organ, or the paralysis or the gangrene of the distal organ. That the operation on the wrong patient is also a surgical medical negligence. The operation on the wrong side is also a medical negligence. Too tight plaster is a medical negligence. Then may be anesthesia and negligence in anesthesia. Then the transfusional mistake, किसी और ब्लड ग्रुप का लगना था, लगा कोई और दे कर दिया. रिमूवल ऑफ द रॉन्ग ऑर्गन, किडनी की बजाय जो है ना लीवर ही रिमूव कर दिया, लेफ्ट किडनी की बजाय रॉन्ग किडनी राइट किडनी रिमूव कर दी. Then operation on the wrong fingers. Same way, failure of X-ray to diagnose the fracture is also a medical negligence. Now this is a hospital of the London, and see the prescription of the doctor. The handwriting of the doctor is a worldwide problem. So please make your handwriting so that every person can read your writings. See here, nothing is, no drug, nothing can be read on this paper. See here, a drug is written by the doctor. It may be chlorpheniramine, it may be chloramphenicol, it may be chlorpromazine. You may say anything. So जो अपनी राइटिंग है उसको सही करें ताकि जो है ना आराम से हर बंदे को पढ़ा जा सके. देन वी कम ऑन टू द consent.
consent means to give permission, to agree upon. It is a voluntary agreement. It is a voluntary agreement. Agreement not by the force. It is a voluntary agreement. It means to give permission, to agree upon the same thing in the same sense. When two or more persons agree upon same things in the same sense, it is called the consent. When two or more persons agree upon same thing in the same sense, it is said to be consent. So when two or more persons agree upon the same thing in the same sense, they both have consented, consentees. Then the types of consent. Implied consent. Implied consent means understood consent. It is indirect consent. It is unspoken consent. You are sitting in your clinic. You are on your chair. There is a stool no person is sitting there. A person comes and sit on the chair and describe what he is suffering from. This is the implied consent, which is understood from his behavior, which is indirect, which is unspoken. आप अपने क्लिनिक पे बैठे हुए एक बंदा आके वो मरीजों वाले स्टूल पे बैठ गया है, तो इट मीन्स इट इज़ एन implied consent, which is understood, which is not spoken. कि यो बंदा आके उस स्टूल पे बैठा है, इसका मतलब यही है कि वो इलाज कराने के लिए आया है. दिस इज कॉल्ड द implied consent. It is understood, it is indirect, it is unspoken. Then the second type of consent is the express consent. Express consent is two types. It is oral and written. It is oral and written. So express consent, implied consent and express consent, two main types. It is oral and it may be express consent, may be oral, it may be written. Oral is also according to the law. It is oral consent is admissible before the law, but please keep it in mind that you should take the written consent, because the proof of oral consent is no proof. You cannot prove this type of consent before the court. ओरल जो कोर्ट है, जो कंसेंट है, जो ज़बानी ली गई है, उसको आप अदालत में साबर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो बेटर यू शुड टेक द रिटन consent. Better you should take the written consent. Written consent may be two types. One is the blanket consent and other is the informed consent. So this written consent may be blanket, जैसे कंबल डाल देना, मिट्टी पाओ हर चीज़ दे उत्ते, कंबल डाल देना, हर चीज़ को कवर कर लेना. जैसे मैं मरीज़ कंसेंट देता है, आमतौर पे हमारे अस्पतालों में ऐसी होती है कि मैं अपना हर किस्म का ऑपरेशन अपने हर किस्म की बेहोशी में कराने के लिए तैयार हूँ और अपने नफ़ा नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार हूँगा. दिस इज़ द ब्लैंकेट कॉन्सेंट. ना तो पता लगता है कि किस चीज़ का ऑपरेशन है, ना पता लगता है किस डॉक्टर ने करना है, ना पता लगता है कि इसका कब होना है, कब नहीं होना, किस डेट को होना है. तो ये एक ब्लैंकेट कॉन्सेंट है जिसका जो बिल्कुल इनवैलिड कॉन्सेंट है. दैट द ब्लैंकेट कॉन्सेंट मीन्स एवरीथिंग इज़ कवर. इट इज़ एन invalid consent. So blanket consent, I am ready to undergo any type of operation under any type of anesthesia from any doctor, and I will be responsible for this operation, for any outcome. This is the blanket consent, and this blanket consent is invalid consent before the law. Then is the informed consent. Informed consent means when the rule of full disclosure. Informed consent means everything is told to the patient. Everything is told to the patient. Informed consent, as we will study it later on. In informed consent, everything is told to the patient. What is the diagnosis? What are the ways of treatment? And what will be the outcome of the
treatment, what will be the possible side effect of the treatment, and so everything is told to the patient in informed consent. Express consent, it is two types, oral and written. Express consent is oral and written. Both are admissible before the law, but better you should take the written consent, because the written consent can be proved before the court. A document maybe it is a documentary evidence. Written consent is documentary evidence. ओरल consent को ज़बानी जो है ना वो consent को अदालत में प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए you should take the written consent. This written consent, this express consent may be taken as operative procedure, but it should be taken before the operative procedure. जो consent operation के बाद ली जाएगी, it will be treated as invalid consent. So for operative procedure, for examination genitalia, there should be written consent. For examination of genitalia, before examination, it is the legal duty of the doctor. He should take the consent of the patient, particularly for genitalia, genital examination. Then for the medical legal examination, again the consent is required, and there is a column, is a space left in the medical legal certificate for this consent. So for every medical legal case, the consent of the person should be taken as written consent. Then the rights of the spouse. So any operation on the genitalia, both the consent of the husband and the wife is necessary. In case of any operative procedure on genitalia, the consent of the husband and wife both should be taken. If the operation is only one person will undergo this operation, even then, if the genitalia are involved, then the consent of both the husband and wife should be taken. It is your legal duty. Informed consent means the rule of full disclosure. Everything is told to the patient. Everything is told to the patient is the rule of full disclosure. Everything is told to the patient as full information is given to the patient as the disease. Please tell him in informed consent what disease he is suffering from. Then what diagnostic techniques and tests will perform to clarify your diagnosis. कौन कौन सी जो है डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, MRI करना है, CT स्कैन करना है, X-ray करना है, ब्लड टेस्ट करने हैं, कौन सा टेस्ट करना है, it is also told to the patient. Then the risk involved is also told to the patient. What are the possible risks occurring of this operative procedure, of this diagnostic procedure? कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन सा इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, is there any possibility of disability? कोई disability तो नहीं हो सकती. It is also told to the patient in informed consent, rule of full disclosure. So prognosis, chances of recovery. इस operative procedure के बाद what are the chances of recovery? इसमें chances of recovery क्या है, prognosis क्या है, कितना को आप ठीक हो सकते हैं इस ऑपरेशन के बाद. ठीक है. What alternative methods of treatment are present? They are also told to the patient. So everything is described in informed consent. Everything is told to the patient. This is called the rule of full disclosure. Everything, every information is provided to the patient as what disease he is suffering, and what are the diagnosis techniques he have to undergo, or what test will be done, the blood test, the urine test, the saliva test, the MRI, the CT scan, X-rays, or ultrasound, and then what are the risks involved
इन दिस ऑपरेशन, इसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या है, इसमें साइड इफ़ेक्ट, इसके दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपके चांसेस ऑफ रिकवरी क्या है, अगर आप फुल रिकवर हो जाएंगे या कितना चांसेस है रिकवरी का, फुल रिकवर होंगे या 30-40% इम्प्रूवमेंट का चांसेस है, और अगर आप ऑपरेशन नहीं करते तो नहीं करवाते तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो मौजूद हैं. एवरीथिंग इज़ टोल्ड टू द पेशेंट एंड द पेशेंट विल डिसाइड उसने ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना. दिस इज़ कॉल्ड द इन्फॉर्म्ड consent. Invalid consent, the consent which is not valid before law. Invalid consent, इस consent की लीगली कोई अहमियत नहीं है, लॉ में, कानून में इस consent की, invalid consent की कोई हैसियत नहीं है, वो ली consent ना ली एक ही बराबर है. As age, as you already know, the minimum age requirement to be consented is the 12 years. So a consent taken by a person under 12 years of age will be treated as invalid consent. The minimum age required to be for the valid consent is the age is the 12 years of age. So minimum age required is the 12 years of age, and if a consent is taken from a person who is less than 12 years of age, then this consent will be treated as invalid consent. Insanity. Again, the section 84 Pakistan Penal Code, that a person who is suffering from a disease of mind in such a way that he does not know the nature and consequence of his act, then the consent given by an insane person will be treated as invalid consent. The insane person is not allowed to appear before the court as witness also, and the consent given by an insane person is also treated as invalid consent. Intoxication. If a person is under the effect of, is intoxicated, is under the effect of alcohol, he has consumed the alcohol and is under the effect of alcohol in such a way that he does not know the nature and consequence of his act, then this consent taken from an intoxicated person will be treated as invalid consent. So consent taken from a person who is has consumed the alcohol, is also under the effect of alcohol, this consent will be treated as invalid consent. Then the consent taken for unlawful act will also be treated as invalid consent. Consent लेना या ना लेना इसका फायदे कोई. As if a person, both are involved, two male persons both are involved in a case of sodomy with the consent, so the consent will be treated as invalid consent, no role of consent, because this act is itself is a crime. This act is itself a crime. जो एक्ट कर रहे हैं वो खुद ही जो लॉ के नज़रों में वो सही नहीं है, तो इसके लिए consent लेना या ना लेना, ये it will be treated as invalid consent. So consent taken for any unlawful act will be treated as invalid consent. जो consent taken for any unlawful act as consent taken for sodomy, this consent will be treated as invalid consent because the sodomy itself is unlawful. So any consent which is taken for unlawful act will be treated as invalid consent. Then consent taken by impersonation. As you know, impersonation, किसी और की जगह पे कोई और consent दे दे तो ये will be impersonation. The consent taken by impersonation will also be treated as invalid consent. Consent by impersonation
is also treated as invalid consent. किसी और की जगह पे किसी और ने consent दे दी, it will be treated as impersonation, invalid consent. Consent taken by fear, fraud, and force, 3Fs, will also be treated as invalid consent. Consent treated by taken by fear, fraud, and force will also be treated as invalid consent by fear that he will kill that person. Consent taken on the gunpoint. That consent taken by fraud. किसी और जगह पे साइन करवाने की बजाय किसी और कागज़ पे करा लिए, इसी तरह ज़बरदस्ती के साथ जो consent ली जाएगी, it will be treated as invalid consent. Number 6, the consent taken after the act will also be treated as invalid consent. कोई consent अगर आपने ऑपरेशन के बाद ली है तो वो invalid consent होगी. कोई consent जो कि आपने मरीज़ के एग्जामिनेशन के बाद ली है, it will also be treated as invalid consent. So the consent should be before the start of treatment, before the examination of the patient. The consent should be taken before the act. Consent should be before the act, and if the consent is taken after the act, it will be treated as invalid consent. ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद consent ले ली तो ये invalid consent है. इसी तरह किसी बंदे को एग्जामिनेशन के बाद अगर consent ली है तो ये इनवैलिड consent होगी. consent जो है वो हमेशा एग्जामिनेशन से पहले, ट्रीटमेंट से पहले, इलाज से पहले और ये ऑपरेशन से पहले लेते हैं. इसको बाद में लेंगे तो इनवैलिड consent होगी. सो 7th number invalid consent is the blanket consent. The blanket consent will be treated as invalid consent. As you already know that the blanket consent covers all the aspects. It is a vague consent, no specific consent. As a person say, I will ready to undergo operation under any kind of anesthesia by any surgeon and I will be responsible for the consequences. No, कि मैं जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो करवाने के लिए तैयार हूँ और मैं नफ़ा नुकसान का ज़िम्मेदार हूँगा. ये ब्लैंकेट कॉन्सेंट है and it will be treated as invalid consent. Please keep it in mind, it is invalid consent. Section 90 deals with the consent. Now, Section 90 deals with the consent. So, the MCQ may be as Section 90 deals with 1. Consent, 2. Injury, 3. Intoxication, 4th. Age, and so on. Multiple choice question. The Section 90 deals with the consent. Consent known to be given under fear or misconception. Again, I have told you the consent taken by fear, fraud, and force is invalid consent. Now, please, we will read it. The Section 90. A consent is not such a consent as it's intended by any section of this code. Any section of this code, if the consent is given by a person under fear of injury. So, consent taken by fear and force, or under a misconception of fact. झूठ बोल के जो ली जाए consent वो भी invalid consent है. And if the person doing the act knows or has reasons to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, so consent by impersonation is also an invalid consent. Consent of insane person, as I have already told you, invalid consent if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxicated, in both the way he is unable
to know the nature and consequence of its act by unsoundness of mind. And if the person is intoxicated, is under the, he has consumed the alcohol and is under the effect of alcohol, then this consent is invalid consent. Is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent, or consent of the child. Again, the consent under the age of 12 years is not a valid consent. So see under section 90, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age. Again, I have told you this is an invalid consent. Now, that this exception shall not be extended to intentional causing of death or attempting to cause death. So section 92, ये इसमें दो एक्सेप्शंस हैं कि अगर आपने कंसेंट ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि you should intentionally cause death of that person or you should attempt to kill that person. That this exception shall not extend to intentional causing death of the person or the attempting to cause death. इसका ये जो है कंसेंट लेने का मतलब कतन ये नहीं है कि कोई बंदा जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश करे ऑपरेशन के दौरान या उसको कत्ल कर दे, जो ये जो है ना, ये इसका मतलब कतन ये नहीं है. और सेकंड एक्सेप्शन इज़ that this exception shall not extend to the doing of anything which is in person doing to know to be likely to cause death or any purpose other than the preventing the death or grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity. मीन्स के इसका मतलब ये नहीं है इसका कि आपने जो कि कंसेंट ले ली है आप जिस तरह मर्ज़ी एक्ट कर दें या उसको कोई ग्रीवियस इंजरी आ जाए ऑपरेशन के दरमियान आपकी नेगलिजेंस से, या आप जो है ना उसको मार दें या कोई डिजीज़ उसको हो जाए, तो इसमें जो है कंसेंट में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं. क्लियर? दो एक्सेप्शंस हैं 92 में जो कि कंसेंट में चीज़ें शामिल नहीं हैं. Act done in good faith for benefit of a person without consent. Now, suppose that you are working in a basic health unit and you are suppose that right from above you are working in a tertiary care hospital, DHQ hospital or a teaching hospital, and it is very much common. It is very much common that some persons take somebody to the hospital and then they keep this person to the hospital and run away. कुछ बंदे जो हैं वो किसी ज़ख्मी को या मरीज़ को उठा के अस्पताल में ले आते हैं और अस्पताल के एमरजेंसी में उसको लटा कर वो बंदे जो है ना वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें कहीं पुलिस ही ना पकड़ ले कि आपने ये खुद इसको इंजरी लगाई है या आपकी वजह से ये बंदा हुआ है. चूँकि टू अवॉइड दिस लीगल कॉम्प्लिकेशन, लीगल एक्शन, जो बंदे हैं ना वो भाग जाते हैं. तो नाउ देयर इज़ नो पर्सन अकम्पनिंग दैट पेशेंट. आप क्या करेंगे? किधर से कंसेंट लेंगे? तो अगर तो आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो यू शुड इन्फॉर्म द medical superintendent, maybe additional medical superintendent, maybe deputy medical superintendent, then ask him, take his consent, take his permission. It will be treated the consent of the patient. Now see, the person जो है he is not able to give the consent. तो person जो है वो मरीज़ को उठा लाए हैं, जो ज़ख्मी है, जो बेहोश है, उसको कोई होशो वास उसके नहीं है कि वो आपको कंसेंट दे सके. तो इस सिलसिले में अब साथ भी उसके जो बंदे हैं वो भाग चुके हैं, तो ये आपको कंसेंट किससे लेनी है? जो आपका इंचार्ज है, आप उससे कंसेंट ले लें तो वो आपको कहेगा कि ठीक है इसका इलाज तो शुरू करें ना, इसकी जान तो बचाए ना. ठीक है, तो ये इट विल बी कंसेंटेड बाय द
consent by the MS, by the DMS, by the AMS. अगर वो भी नहीं है तो आप जो हैं वो किसी साथ आपका जो कुलीग काम कर रहे हैं आप उनसे कंसेंट ले सकते हैं कि इसकी जान बचाने के लिए, तो आप उनसे भी कंसेंट ले सकते हैं. नाउ सी सपोज यू आर वर्किंग in a basic health unit, or others you are the only single doctor, and same way a person has been brought to you, he is unconscious, he is unable to give his consent. उस सिलसिले में वो जो है वो कंसेंट देने के काबिल ही नहीं है, तो आप उसको अब क्या करेंगे? कोई और बंदा नहीं है, बट यू शुड डू. वो मरीज़ भी कंसेंट नहीं दे सकता और भी कोई बंदा उधर नहीं है, यू आर द ओनली डॉक्टर, देन वट विल यू डू? यू शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट इन गुड फेथ टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन. स्टार्ट द ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन. In that case, you are all alone and you cannot take the consent from any person, then you should start the treatment in good faith without consent. This is the act done in good faith for benefit of a person without consent. ठीक है जी? Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith. Even without that person consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain the consent for the consent in time for the things to be done with consent. Now, the same way as I have described to you that no person is available for the consent, and to save the life of the person, start the treatment without any consent. You have done this in good faith to save the life of the person. तो अगर आप इस तरह बगैर किसी consent के proceed करेंगे तो आप it will be lawful. अगर आप बगैर consent में, जैसे कि जो कोई भी बंदा कंसेंट वाला देने के लिए नहीं है, वो पर्सन खुद भी जो बेहोश है या कंसेंट देने के काबिल नहीं है, आप इसको विदाउट कंसेंट शुरू करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज लॉफुल बिकॉज यू हैव एक्ट इन गुड फेथ विद ड्यू रिगार्ड एंड केयर. यू हैव एक्ट विद ड्यू रिगार्ड एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन एंड केयर, एंड सो प्रोसीड इट. स्टार्ट ट्रीटमेंट. कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशंस. Now, consent is required for examination, but under certain cases, consent is not required. You may proceed without any consent. You may proceed without any consent under certain conditions. जो है वो अगर बंदा consent नहीं दे रहा तो उसकी consent को कोई अहमियत नहीं है, आप सीधी तरह जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना उसका एग्जामिनेशन करें. This is the compulsory medical examination. Number 1, prisoners in the jail. जो कैदी हैं वो कहता है कि वो कैदी कहता है जी मैं नहीं एग्जामिनेशन की इजाज़त देता आपको, मैं नहीं ये करवाना चाहता. नो, यू शुड एग्जामिन दैट पर्सन विदाउट हिज कंसेंट. इट इज़ लीगल. कंपल्सरी जो इन बंदों का जो है आप कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. एक्ट प्रिजनर्स इन जेल, वो ना भी कंसेंट दे तो आप उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं. यू कैन डू द कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन और द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो यू शुड प्रोसीड. उसके लिए कंसेंट की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आप जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. थर्ड है नोटिफाइएबल डिजीज़. एक नोटिफाइएबल डिजीज़ है, जैसे ये आजकल ये कोरोना फैला हुआ है, ये जितनी भी नोटिफाइएबल डिजीज़ हैं, जैसे ये है पोलियो है, इट इज़ नोटिफाइएबल डिजीज़. तो इस सिलसिले में अगर कोई मरीज़ आपने उसको एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए नोटिफाइएबल डिजीज़ के लिए उसकी जो है ना कंसेंट की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डन मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट हिज कंसेंट फॉर द नोटिफाइएबल डिजीज़. वो कहता है जी नहीं मैं ब्लड नहीं देता अपना करने के लिए, मैं टेस्ट नहीं करवाता, मैं ये नहीं कराता, वो नहीं कराता. तो नो, यू शुड प्रोसीड अगर इफ़ देयर इज़ एनी नोटिफाइएबल डिजीज़. It is under the compulsory medical examination. Another is the immigrants, so persons coming from the other countries,
दूसरे मुल्कों से जो आए हैं उनके भी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनका कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं विदाउट देयर कंसेंट। दैन द फूड हैंडलर एंड डेयरी वर्कर्स, ये जो फूड हैंडलर्स हैं, ये जो बेकरी शेकरी पे काम करने वाले हैं, जो तंदूरों पे काम करने वाले हैं, जो होटलों पे काम करने वाले हैं, जो डेयरी में काम करने वाले हैं, पर्टिकुलरली आप इनका ज़बरदस्ती मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इस सिलसिले में उनकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कम्स अंडर कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि आम तौर पे ये कैरियर होते हैं इसके टाइफाइड फ़ीवर पे कैरियर ये होता है, उसको ख़ुद कोई साइन सिम्टम नहीं होती, लेकिन वो जो है ना ये जो है बीमारी टाइफाइड जो है वो दूसरों को फैला सकता है। तो ये ख़ासकर जो फूड हैंडलर्स हैं और डेयरी वर्कर्स हैं, इनका एग्जामिनेशन जो है ना बग़ैर किसी उनकी कंसेंट के भी किया जा सकता है। इस तरह स्कूल हेल्थ सर्विस में जो है किसी भी किस्म की इसकी कंसेंट की नहीं ज़रूरत है, कोई भी बच्चों की या बच्चों के वालिदैन की, आप इसमें कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यू आर अलाउड फॉर कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन अंडर स्कूल हेल्थ सर्विसेज। सो ये जो बंदे हैं आप इनका कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इनके लिए किसी किस्म की इनकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कंसेंट फॉर्म है कुछ। आई नेम ऑफ द कंसेंटी, नेम ऑफ द पेशेंट, NIC नंबर, डू हेयर बाई कंसेंट, ऑपरेशन ऑफ, नेम ऑफ ऑपरेशन। जब आपने कंसेंट देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऑपरेशन कौन सा करवा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं अपना हर किस्म का ऑपरेशन हर किस्म के एनेस्थीसिया में कराने के लिए तैयार हूँ। नो, राइट डाउन द नेम ऑफ ऑपरेशन। जब आप कंसेंट लेते हैं, खासकर जो ये डॉक्टर साहबान हैं हमारे, ये कंसेंट लेते हैं तो कंसेंट में जब आप लिखते हैं तो उसमें ऑपरेशन का नाम भी लिखें और एनेस्थीसिया की टाइप भी लिखें। ये लोकल में होगा या जनरल एनेस्थीसिया में होगा, ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। आई हैव बीन एक्सप्लेन्ड फुल्ली, ठीक है ना। ये सीन द consent, I have been explained fully the nature, purpose and inherent risk involved in this surgery and type of anesthesia by doctor. This is the name of the doctor who is going to perform the who is taking the consent. No assurance, so please keep it in mind that no assurance has been given to me that any particular surgeon will perform the operation. If you don't know the name of the surgeon, so don't mention it on the this paper. So please, it is also written that no assurance has been given to me any particular surgeon will perform the operation. Then see the signature of the consentee, मरीज साइन करेगा, उसके ऊपर डेट लिखेगा और ये डॉक्टर जो है कंफर्म करेगा। आई कंफर्म दैट आर रेलेवेंट डिटेल्स in respect of above referred operation and anesthesia has been fully explained to the consentee who has signed this form. जो बंदा जो है वो देखें, I have confirmed that all relevant detail in respect of above referred operation and anesthesia have been fully explained to the consentee who has signed this form. आगे जो जिस डॉक्टर जिसने कंसेंट ली है उसके साइन होंगे और आगे डेट होगी। सो प्लीज़ सी नेम ऑफ द कंसेंटी, CNIC नंबर, ऑपरेशन ऑफ, उसका ऑपरेशन का लिखना ज़रूरी है और एनेस्थीसिया का लिखना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं अपना हर किस्म का ऑपरेशन हर किस्म की बेहोशी में कराने के लिए तैयार हूँ। दिस विल बी ए ब्लैंकेट कंसेंट। सो ऑपरेशन का नाम और टाइप ऑफ एनेस्थीसिया का नाम भी लिखना ज़रूरी है। देखिए, आई हैव एक्सप्लेन्ड फुल्ली द नेचर, पर्पस एंड इनहेरेंट रिस्क, जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके, जो पॉसिबल जो अगर कोई डिसेबिलिटी हो सकती है वो भी इसको बतानी ज़रूरी है। पर्पस, इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व इन द सर्जरी एंड आल्सो टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, उसको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो है ये किस लिए ऑपरेशन करना है, ये कौन सा ऑपरेशन है, किस लिए करना है और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। कोई इसमें कोई माजूरी डिसेबिलिटी तो नहीं हो सकती और साथ उसको इसी का बताना है कि एनेस्थीसिया से ये रिस्क इन्वॉल्व है एनेस्थीसिया में।
फिर उसके बाद सिग्नेचर कराने हैं, डेट लेनी है, और नीचे डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि आई कन्फर्म ऑल रेलिवेंट डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव रेफर्ड ऑपरेशन एंड एनेस्थीसिया हैव बीन फुल्ली एक्सप्लेन टू द कंसेंटी. Consentee means the patient. No, for the therapeutic abortion, we see for therapeutic abortion, as you know, this therapeutic abortion involves the genitalia. So here the consent of both the husband and wife is necessary. So we find from observation and examination of she is pregnant, this is from the doctor, and she is suffering from following ailments. This is the condition for the therapeutic relation. Further progress of the pregnancy would give endanger or imperil her life. Therefore, we are of the opinion that it is medical necessary to perform a therapeutic for therapeutic abortion. This is a statement of the doctor. Now see here, same way, the operation for the request for sterilization, making a person willfully sterile, unable to reproduce. So here for the purpose of sterilization, as this operation involve both involve the genitalia. So here both the signature of the husband and wife. See at the end, signature of both husband and wife should be taken before this request for the sterilization. Thank you very much. We will continue inshallah ta'ala.